Hello and welcome. I am VCG Gautam and you are seeing CBSE and CISE class videos 360 channel. This is an intro video of exercise 3G in factorization of polynomials chapter of class 9th math. This exercise is based upon the formula x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. So in this video we shall discuss how to form the formula. ये formula कैसे बनता है. I hope you will understand. If you like the video, so please like and subscribe the channel and press bell icon button for more updates and share with your friends. Let's start. X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So x cube plus y cube, इसको हम ब्रैकेट के साइड क्लोज कर लेंगे, एंड जेड की माइनस 3xyz एंड x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y इंटू x प्लस y होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x y. ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे एंड ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूले के थ्रू बना है, जैसे x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई होल क्यूब एंड प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई को इक्वल के अदर साइड ट्रांसपोज करेंगे, देन नेगेटिव में साइन हो जाएगा, सो माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई. सो इस तरीके से ये आता है, प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz एंड x प्लस वाई को हम यूलेट करेंगे. सो हियर x प्लस वाई इक्वल टू u, ये हमने लेट किया. सो नाउ दिस एक्सप्रेशन इज u क्यूब माइनस 3xy इंटू u प्लस जेड क्यूब minus 3xyz and u cube plus z cube minus 3xyu minus 3xyz and applying e cube plus z cube. So का फॉर्मूला, और इस वक्त हम इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, और जो इसके प्लेस पे हम लिखें u प्लस जेड इंटू u स्क्वायर माइनस u जेड प्लस जेड स्क्वायर एंड टेकिंग माइनस 3xy कॉमन. So 3xy into u plus z. u plus z यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, so taking common u plus z and u square minus uz plus z square minus 3xy and u is what? X plus y. So u replace with x plus y.
so x plus y plus z and x plus y square minus x plus y into z plus z square minus 3xy and x plus y plus z and opening of this formula. So x square plus y square plus 2xy and multiplying z inside. So minus xz minus yz plus z square minus 3xy x plus y plus z into x square plus y square and plus z square plus 2xy minus 3xy, so minus xy and minus yz minus zx. So and x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. So this is the way to form formula. इस फॉर्मूले में सेकंड कंडीशन ये इफ x प्लस वाई जेड इक्वल टू 0, जब x प्लस वाई जेड 0 होता है देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz ये फॉर्मूला होता है. सो x क्यूब प्लस वाई क्यूब putting x plus y plus z equal to 0 in this formula. So x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is 0. x plus yz is 0. So हमने यहाँ पे 0 कीप कर दिया and x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. So x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz and 0 का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में होगा, सो 0. सो x क्यूब y cube plus z cube and transpose minus 3xyz to the right hand side, so it becomes positive. So 3xyz, so x cube plus y cube plus z cube plus equal to 3xyz ये होता है. So this exercise इन्हीं टू फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है. After watching this video, you will be able to form the formula. So stay tuned and best of luck.